Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and we have completed chapter number 2, Consumer Equilibrium from Microeconomics. Okay, तो ये चाहे ICS, ISC हो या CBSE हो, okay, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा because the concepts are same. As already I every time I just used to say these sentences just because to keep this in mind कि बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता है, concept और chapter आपका एक ही रहेगा, right? So now let's start here. But before that, I would like to request here to subscribe to Economics at Ease, your shortcut to scoring full marks in economics. And today, what we will do here, we are going to just do the summary of consumer equilibrium chapter, and after that, I'm going to do the practicals. Okay, so next video में आपको जो unsolved practicals है, we will do that. Okay, so let's start the summary here. Summary में देखो मैंने कोशिश करी है कि आपको जो है हर जो टॉपिक हैं जो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब पे एक एक में स्लाइड मैंने बनाई है ओके तो इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको आसान रहेगा 1 मिनट रिवीजन के लिए कि मेन मेन पॉइंट्स उसमें क्या होने चाहिए विद द डायग्राम्स along with the diagrams along with the tables and everything okay so I hope ये आपको काफी हेल्प करेगा and if you please do like this then please just subscribe the channel and share it with your friends also. So first of all, आपका जो chapter है consumers equilibrium, the meaning of consumer equilibrium, it can be asked in 1 marks also. Okay, so it refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction. उसको क्या होना चाहिए? Equilibrium will be a position when it is having maximum satisfaction and the income ओके अलॉन्ग विद इट्स इनकम दैट इज उसकी लिमिटेड इनकम के अकॉर्डिंगली उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज एंड देयर इज नो मींस नो नो का मतलब अब वो इसी चीज पे ही उसको रहना है नो चेंजेस इन दिस कंडीशन ओके इन द एग्जिस्टेंस way of expenditure, right? So this is called the consumer equilibrium. That is maximum satisfaction he is deriving out of spending or with his limited income. Okay. Now इसमें दो main approaches है जो उसके बारे में हमें पढ़ना है. That is the cardinal utility approach and the ordinal utility approach. मैंने साथ में इसके synonyms भी ऐड कर दिए हैं ताकि बच्चों से ये भी different तरह से पूछा जाता है. MCQs में पूछ सकते हैं. तो उस चीज को मैंने ध्यान में रख के आपके लिए ये स्लाइड्स डिजाइन करी है राइट सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज आल्सो नोन एज मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस रिमेंबर दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके इस तरह से क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट करके दे सकते हैं देन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस भी इसको जाना जाता है इस नाम से भी जानते हैं इसको नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का मीनिंग क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिफर्स टू वांट satisfying utility का meaning पहले मैंने बताया it refers to want satisfying power of a commodity now utility can be measured according to cardinal utility can be measured in two terms that is either in the monetary ways or in utils okay and it was designed by whom it is a Marshall ने किया remember that also okay so that's why we know it as a marginal utility analysis then meaning of यहाँ पे क्या है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो अगर आपसे कार्डिनल यूटिलिटी पूछा जाएगा तो आप मीनिंग ऑफ यूटिलिटी बताओगे देन टू तरह से आपको मेजर कर सकते हैं टू वेज में and then the meaning of utility and marginal utility okay the meaning of total utility is what it refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity यानी कि total satisfaction जो आप एक commodity से derive करते हैं that is known as a total utility and the formula is also I have given please go through it मैं सब आपको डिटेल में बता चुकी हूँ अगर in case टोटल यूटिलिटी आपसे पूछा जाता है तो आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है राइट मैंने इसलिए इसको अलग अलग तरह से आपको बताया कि कोई भी एक क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है किसी भी पॉइंट पे तो आप उसको कैसे जो है करेंगे क्वेश्चन कैसे आंसर करेंगे सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स अलोंग विद द डायग्राम टोटल यूटिलिटी में ऐसे आप दिखा दोगे खाली ओके टोटल यूटिलिटी का डायग्राम हमेशा इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग at decreasing rate then it reaches its maximum and then it starts following ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ then next is the marginal utility मतलब क्या additional utility है आप जो भी एक एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी को डिराइव कर रहे हो उसमें आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है वो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करता रहता है विद द इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी मैंने आपको बताया था इट इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी ना
चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ये सब आप जूम करके एग्जांपल्स देख लिएगा, राइट। एंड द डायग्राम, अगर खाली डायग्राम आपको बनाना है मार्जिनल यूटिलिटी का, देन यू कैन जस्ट मेक दिस काइंड ऑफ डायग्राम, दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहले आप मीनिंग बता देंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, देन यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई, बस यही चीज कॉपी एंड पेस्ट करना है, राइट। TU increases with an increasing consumption of a commodity as long as MU is positive. तो जहां तक ये MU positive है, TU just keep on increasing. TU increases but a diminishing rate. Okay, you can see that is increasing but a diminishing rate. The diagram is also there. Now when TU reaches its maximum point, that is the maximum यहाँ पे है, MU becomes zero, that is marginal utility becomes zero, but it is still positive. Okay, remember, this is known as the point of satiety. So this is known as the point of satiety, and this यहाँ पे क्या होगा, TU maximum होगा और MU जो है zero हो जाएगा. TU curve stops rising after this stage. At this stage, अब इसके बाद आप TU को बढ़ता हुआ नहीं देखोगे. Beyond the point of satiety, TU starts falling and MU becomes negative. Okay, so I hope it is quite clear. मैंने सबके आपको जो है पहले से ही सब समझा दिया है, बट आई होप दिस विद द हेल्प ऑफ दीज स्लाइड्स यू कैन इजिली जस्ट गेट द डायग्राम, टेबल, एवरीथिंग इन वन ऑन वन पेज। ओके, तो ये मेरा एक सोचने का तरीका था कि बच्चों को इस तरह हेल्प हो सकती है, राइट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मीनिंग क्या है? अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी आता है तो एज इट इज आप इसको आंसर कर देना, कहीं पे भी मार्क्स आपके नहीं कटना है, राइट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, दैट इज DMU भी बोला जाता है, स्टेट्स दैट एज इफ वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, डिमिनिश करने लगता है, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे आप देखिए टोटल सेटिस्फैक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन MU क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, और जहां पे जीरो आ जाएगा MU, यहाँ पे TU क्या है, इस मतलब मैक्सिमम है, और MU आपका जीरो, इट इज मीन इट इज अ पॉइंट ऑफ सैटिटी। एंड नाउ इसके बाद अगर हम कंज्यूम करेंगे तो आप देखते हैं वो नेगेटिव में MU चला जाता है। इसके अजम्पशंस हैं, प्लीज गो थ्रू इट, दिस इज द डायग्राम, प्लीज जूम इट एंड देन यू कैन इजिली सी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी है, राइट। Now next here, consumer's equilibrium in case of single commodity. Okay, now you have to see केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में क्या होता है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वो हमने पहले पढ़ा था, विद लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, राइट। नाउ इसमें क्या होगा, आप इसको जरा से जूम करके देख लिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी का ये मेन आपका होना चाहिए, राइट। फॉर्मूला इज दिस, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी कि कहीं पे भी कम ज्यादा होगा, इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। जहां पे भी ये पॉइंट हमारा आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ हियर यू कैन से दैट दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, दैट इज MU शुड बी इक्वल टू प्राइस एंड MU फॉल्स, ये आपको पता ही है, हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स करता है as consumption increases. It is implied because of the operation of the law of DMU. Law of DMU बहुत important है. Go through this diagram, the table, and then you can make this kind of diagram. Okay, I have already, मतलब मैं सब कुछ explain कर चुकी हूँ thoroughly हर एक slide पे, इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हुए थे, but now with the help of this slide, I hope you are able to answer much better. Okay, now consumers equilibrium in case of two commodities. अगर दो commodities होंगी तो कैसा होना चाहिए? First of all, इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कह सकते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और गॉसन सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है गॉसन का? ओके, सो गॉसन का फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ DMU है। ओके, देखो लिखा है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU, ये लॉ ऑफ इट इज आल्सो नोन एज गॉसन्स फर्स्ट लॉ। प्लीज रिमेंबर, इस तरह के ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ इन केस ऑफ टू कमोडिटीज यू विल जस्ट मेक द डायग्राम लाइक दिस, and then meaning of law of equity marginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when the ratios of two commodities, जो ratio है दो commodities का, and the respective prices are equal and MU falls, ये आपको पता है, ठीक है। now इसका क्या है, what happens when the above equation is not equal, then you just go through it, this is the condition। अगर इसमें जरा से भी changes आते हैं तो उसका आपको ये बताना होगा, then explanation is there। okay, ये explanation है इसका, and then the diagram is here, and then you have the tabular form। okay, then the next is here, what comes next, the indifference map, right। now ordinal utility approach, अभी तक हमने क्या पढ़ी थी, that is the
मार्जिन वो मार्शल का पढ़ रहे थे, राइट? कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दैट इज आल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस। नाउ मीनिंग इज ऑलरेडी गिवन हियर by this theory was given by J.R. Hicks and R.J.D. Allen. Because of that, it is known as the Hicksian theory. Now, meaning of indifference curve, that is a graphical representation of various alternative combinations of bundles of goods among which the consumer is indifferent. It means वो satisfaction उसको दोनों commodities को derive करके एक ही satisfaction मिल रहा है. Okay, it is a locus of points that shows such combination of two goods which the consumer same satisfaction is derived. Okay, it is also known as equal satisfaction curve or iso utility curve. So don't get confused. Indifference map क्या होता है? When two or three, you can say the family of indifference कर्व, ओके, इट इज द फैमिली होगा है, तो इंडिफरेंस कर्व आपके ऐसे बनते हैं, ओके। तो इन सबको जब इकट्ठा करते हैं दैट इज नोन एज द इंडिफरेंस मैप। ना इंडिफरेंस कर्व के आपका क्या है? दैट इज द अजम्पशंस। टू कमोडिटीज होनी चाहिए, नॉन सैटिटी होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग एमआरएस, रैशनल, कंज्यूमर होना चाहिए। देन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। Now, marginal rate of substitution, इसका meaning पूछा जा सकता है. The meaning is itself given and in simple words. The diagram is also been just यहाँ पे बता दिया कि that is declining as we move downward along the curve. This gives convex shape to the indifference curve. सब में law of DMU ही आता है, right? Now the next slide here, we are getting the budget line and budget set. Budget line क्या होता है? It refers to a graphical representation of all the possible combinations of two goods which can be purchased by spending his entire income. देखो budget line में भी डिफरेंस इतना याद रखना budget set के डिफरेंस में कि budget line में क्या होता है? Entire income, मतलब मेरी एग्जाम्पल 20 रुपीज मेरी इनकम है तो मैं 20 रुपीज पूरा खर्च कर दूंगी। बजट सेट में क्या होता है? 20 रुपीज ना खर्च करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 रुपीज खर्च करे, so that is known as the budget set. Okay, the difference is this main. Then budget set के two goods which a consumer can afford given his income and the price in the market. Okay, तो ये इसका algebraic इसका expression है and this is the points at which okay the income is fully utilized, that is known as the budget line. और budget set क्या होता है? On the line and within the line. ओके यानी कि इनकम आपकी जितनी थी उसके अंदर अगर आप स्पेंड कर रहे हैं और बाहर उसी के ऊपर कर रहे हैं उतनी ही पूरी टोटल इनकम आप स्पेंड अपनी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ बजट सेट। द पॉइंट विच इज इनसाइड इट मींस अंडर स्पेंड इनकम शो कर रहा है और जो पॉइंट आउटसाइड है दैट इज अनअटेनेबल। ओके, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन हियर एंड देन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बजट लाइन एंड बजट सेट, गो थ्रू इट। ओके, then here the slope of the budget line, the properties, the income of the consumer changes. If the income of the consumer changes, the whole budget line will shift either left if the income increases and in right if the income decreases. Then price of the commodities, अगर एक का प्राइस चेंज हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए का चेंज हो रहा है तो सिर्फ ए में चेंजेस दिखाओगे, और अगर बी का यहाँ पे हो रहा है तो बी का। गो थ्रू इट, मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके आसानी के लिए एक जगह पे सब चीजें रख दी हैं, राइट ना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम कैसे करते हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट। ओके, बजट से होता है, बजट लाइन से। नाउ गो थ्रू विद दिस एंड देयर आर डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, तो ये सब पढ़ाया जा चुका है। ओके, नाउ हियर इज द conditions that has to be achieved well when we are doing the consumer's equilibrium with the help of indifference curve analysis, and I have given all the explanations. Okay, now indifference curve जहाँ पे आपका बजट लाइन और आपकी क्या नाम लो इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे मीट कर रहे होगे वहीं पे जो है आपको क्या करना है, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, राइट? The consumer is at equilibrium at point E, okay, when budget line and is just tangent or meets or touches to IC2. Okay, so with this we come to the end. Hopefully you understand it very well. आप आराम से हर पॉइंट को, हर चीज को आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो। एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया आपके साथ। होप यू लाइक इट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।